actor wants to work in an इम्तियाज अली फिल्म, वो ओल्ड स्कूल लव अभी पॉसिबल ही नहीं है। स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में कहाँ से ओल्ड स्कूल होगा, कहाँ से लोग लेटर्स लिखेंगे और वेट करेंगे 1 हफ्ते के बाद जवाब आएगा। अगर हमने किसी को मैसेज किया और अगर 5 मिनट में जवाब नहीं आया, 5 मिनट में जवाब नहीं आया, तो हम वी गेट वेरी लाइक हाइपर, वी गेट वेरी एंग्स्टी, वी गेट लाइक व्हाट द हेल, वेयर इज ही, व्हाई इज ही नॉट रिप्लाइंग। रिश्ते ऐसे बनते नहीं है कि वो एटीट्यूड अगर हम रखें ना कि चला तो चला और नहीं चला तो नहीं चला तो देख लेंगे, सो अगर आप उस एटीट्यूड के साथ जाओगे तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। आई बिलोंग टू दैट जनरेशन वेयर ओल्ड स्कूल लव is very very important to me. Hi, this is Anjana Sukhani and you're watching IWM Buzz. Keep watching. Hi guys, welcome to IWM Buzz और आज हमारे साथ है अंजना। और अंजना रिसेंटली नजर आई थी मैं वापस आऊंगा और उन्होंने अपने फैबुलस परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीता है। तो वही ये जो मूवी है ऑडियंस को काफी ही पसंद आ रही है। तो चलिए आइए बात करते हैं अंजना से मूवी के साथ साथ उनके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। So firstly, Anjana, big congratulations. Thank you so much. When you got this project, was it always yes or you gave a second thought? How can you give a second thought to him? Of course. No, it was right from the call. I think it was a yes even without hearing what he was going to offer. So no, of course. Whenever we say Imtiaz Ali, we have a picture in front of us कि क्या क्या वो ला सकते हैं ऑडियंस के सामने, और अब तक जितना भी उन्होंने लाया है वो आउट ऑफ बॉक्स है। Yes. Whenever you learn कि इम्तियाज अली को एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं या उनके ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आता है? I think every actor, when I say every means every, छोटा बड़ा बच्चा बुढ़ा, anybody wants to work in an Imtiaz Ali film. And I guess this is unanimous. This is like worldwide, not just in India. I'm sure there are so many people who just want to. I actually was seeing one girl's Instagram thing, and she said that I just once want to meet and work with Imtiaz Ali, and then it's okay if I never get work again ever after. So that is the kind of love that people have for him and his stories. And I think I'm very lucky and very very fortunate that I got to work with him. He was one of the top directors in my bucket list. I wanted to work before I die. So yes, I completed that dream. मैं वापस आऊंगा। ये जो मूवी है ये जो मूवी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो वर्ड स्प्रेड से हुई है। हाउ इज फील टू नो कि जब ऑडियंस उसे पसंद करती है तो वो मूवी को एक टॉप पे लेकर जाती है? I think 100% क्रेडिट ऑनेस्टली ऑडियंस को ही जाता है एंड ऑल्सो इम्तियाज को जाता है। ऑफ कोर्स सारे एक्टर्स ने अपने कैपेसिटी पे फिल्म को प्रमोट किया है, पर जैसे इम्तियाज थिएटर विजिट्स किए उन्होंने, एंड नॉट जस्ट सिर्फ बॉम्बे, वो गए हैं इंदौर, चंडीगढ़, जयपुर, everywhere in South, in Bangalore, in Chennai. So I think single-handedly I would like to give the entire credit to Imtiaz Ali for making this film a super hit. तो एक तो उन्होंने बढ़िया फिल्म बनाई, बहुत बढ़िया एक्टर्स लिए, बहुत बढ़िया म्यूजिक है और फिर बहुत बढ़िया प्रमोशन भी किया उन्होंने। So I guess yeah, I mean hats off to him. I've never seen a director who has visited and has been so eager to listen to the stories of people. It was not just about the film, it was also about how he connected with people on a human to human level, on human stories, and I think that is just so beautiful. Old school romance up work करना is very challenging. What is that missing part from now जो आपको लगता है कि इम्तियाज अली वो फुलफिल कर रहा है? ओल्ड स्कूल रोमांस को देखना मे बी लोग पसंद करते हैं कुछ लोग और कुछ लोग नहीं भी करते। दो जनरेशन इज चेंज नाउ। Yes. What's your take on this? I definitely agree. Old school love was very very beautiful. It was very pure. But वो old school love अभी possible ही नहीं है। स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में कहाँ से ओल्ड स्कूल होगा, कहाँ से लोग लेटर्स लिखेंगे और वेट करेंगे 1 हफ्ते के बाद जवाब आएगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट एट द सेम टाइम there are some qualities of that old love that we can still bring, which is of sacrifice, which is of longing, which is of patience, which is of waiting for someone. हमको अब हर चीज हमको चाहिए फ्लाई बाय नाइट, फटाफट हो, एवरीथिंग शुड हैपन बैक टू बैक। सो आई थिंक वो पेशेंस नहीं है हमें। अगर हम पेशेंस थोड़ा रख लें तो आई एम श्योर वी कैन गेट सम पार्ट ऑफ दैट ओल्ड वर्ल्ड चार्म, दैट ओल्ड लव स्टोरी बैक इनटू आवर लाइव्स। आई थिंक तो ओल्ड स्कूल लव की सबसे खासियत ये होती थी कि वेटिंग, यू हैव टू वेट,
वी हैव टू वेट फॉर योर लव वंस, उनके मैसेज का, उनके रिप्लाईज का, उनका मिलने का। ये जो काफी ही खूबसूरती से दिखाया गया है उनके मूवीज में, हमेशा कोई भी मूवीज में हो, आपको कितना पसंद आता है? और आपने कितना ये माना है कि जो प्यार एक सब्र के बाद आता है वो खास होता है? देखो, ऐसा है कि आजकल की जनरेशन, और हम भी ऐसे ही हो गए हैं, आई विल नॉट डिनाई, इट्स नॉट जस्ट ओनली जेंजी। अगर हमने किसी को मैसेज किया और अगर 5 मिनट में जवाब नहीं आया, 5 मिनट में जवाब नहीं आया, तो हम वी गेट वेरी लाइक हाइपर, वी गेट वेरी एंग्स्टी, वी गेट लाइक व्हाट द हेल, वेयर इज ही, व्हाई इज ही नॉट रिप्लाइंग? सो यू नो, वो पेशेंस खो गया है। आई होप कि हम वो थोड़ा पेशेंस वापस बिल्ड कर सकें। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट कमिटमेंट, it's also about being love is actually a very beautiful thing. The connection, if you form a bond, if you form a connection, if you find that common thread that can join both of you, and which you can, but I think हम effort नहीं डालते हैं। हमको लगता है कि नहीं वर्कआउट हुआ तो छोड़ो, जाने दो, but रिश्ते ऐसे बनते नहीं है कि वो एटीट्यूड अगर हम रखें ना कि चला तो चला और नहीं चला तो नहीं चला तो देख लेंगे, सो अगर आप उस एटीट्यूड के साथ जाओगे तो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा। सो यू हैव टू गिव इट टाइम, डेफिनेटली। अंजना, आपसे मैं जानना चाहूंगी how you want to describe your personal love? कितना आपने भी वेट किया था, कितना आपका ओल्ड स्कूल रोमांटिक लव था? So I mean, wait nahi, but yes, we've been seeing each other, was seeing each other for a very, very long time, and then I got married to that boy. So, but it was a long time. So, आपने भी काफी इंतजार किया है? इंतजार तो मतलब we were together only, so ऐसा नहीं था कि इंतजार, but yeah, definitely, I feel I belong to that generation where old school love is very, very important to me. True. एक्टर्स के लव लाइफ को लेकर काफी डिस्कशंस होते हैं। जब आपका लव लाइफ स्टार्ट हुआ था, व्हाट वाज इनसिक्योरिटी वाज देयर फ्रॉम योर साइड कि अगर मैंने सबके सामने रिवील कर दिया अपने पार्टनर के बारे में, विल आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड प्रोजेक्ट आल्सो? बिकॉज़ एक असम्पशन होता था कि यू आर रिवीलिंग योर मैरिज और योर लव लाइफ, सो स्पेशली फॉर फीमेल एक्ट्रेस उनको प्रोजेक्ट्स अच्छे कम मिलने लगते थे। करेक्ट। Was it true? Is it work from your side also? ऐसा कुछ रहता था? Yes, definitely. I agree. There were times, this I'm talking about 10 years ago. अब ऐसा नहीं होता है. But I think about 8 to 10 years ago, yes, girls were very scared to even say that we are seeing somebody because of the fear of, I won't get a project then. But why shouldn't you? Yeah. Why can't I have a personal life and have, be in relationship with someone? Why is my craft based on the fact that I am with somebody or not? You know, it shouldn't. Do people ask men about that you are married so you'll not get work? So why are women so segregated out of it? And I don't think so that's fair at all. And thank God a lot has changed now. Now being married or even having a child for that matter doesn't deter you from, being a working woman, whether you are an actor or a corporate person or anything. So if men are getting those opportunities, women are equally, I think, competitive. True. Rather far more superior. And I think we deserve those positions, and I think it's high time that we command that now. And one more thing I want to add on. आजकल ये भी है ना कि जो फीमेल्स के अगर एज थोड़े ज्यादा हो जाते तो उनको डायरेक्टली माँ, सास, इसका किरदार मिलता है, लेकिन हीरोज आज भी एजिंग पे है, वो दिख रहा है कि वो हीरो नहीं लग रहे, तो भी उनको सुपर हीरो वाला टैग हमने देखकर बैठा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं एजेस को लेकर भी, स्टोरीज में वी आर सेइंग कि वो फिट नहीं हो रहे, तो भी हमने उनको हीरो बना के give that position, high position. Correct. What's your take on this? I feel definitely I agree in a way, in certain aspects of it with you, because I feel yes, but again times have changed a lot. I don't think anymore that women are sidelined only into behan and mother roles. I think there are women who are married, have children, and are still playing leads. We have a very prime, beautiful examples of Alia and Priyanka doing the same thing, and I'm sure there are others, Kareena for that matter. Even Kajol, everyone, Ravina. I mean, saying, look at now, if you see, there is so much on OTT or otherwise, you see women are leading the stories. And thanks to these, honestly, pioneers of, who have actually created that amazing platform for all other women to be able to do the same. So I feel होता था definitely, अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कुछ sections में I'm sure अभी भी होता है ऐसा कि people say अरे नहीं अभी now she's like 35, अब क्या lead मिलेगा, पर लोग कर रहे हैं.
True. and people are being casted. So I think those days are now gone of suppressing women into saying कि you will only get sister and mother roles. No, not at all. ट्रू। अगर हम आपकी ओटीटी जर्नी के बारे में बात करें तो आपने काफी अच्छे शोज दिए ऑडियंस के सामने, काफी अलग अलग किरदार के साथ आप सामने आई है। व्हेन अबाउट योर फर्स्ट ओटीटी प्रोजेक्ट, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन टुवर्ड्स ओटीटी सीरीज? So that project I literally snatched. So you're not interested? I was very interested because the kind of stories that we can now tell on OTT, वो पर्दे पे आजकल कितनी फिल्म्स रिलीज होती हैं और हर स्टोरी बड़े पर्दे के लिए नहीं होती है, but still these are the stories that need to be spoken about. True. For that matter, my first OTT was Saas Bahu Aur Achar. I am so proud of that project. Yeah. I will always be, because again it was breaking a stereotypical second woman into or a stepmother into a very beautiful character that Apurva Singh Karki created, and I am just so proud of that. These kind of stories are being told and they are breaking the norms of how women are otherwise identified as. True. वो सीरीज ने काफी ही किताब जीते थे। Yes. और आपको भी काफी ही अवार्ड्स मिले थे। Yes. क्या कहना चाहेंगे उस किरदार के बारे में? डू यू फील कि वो सीरीज ने जहाँ उस समय काफी डार्क स्टोरीज आ रहे थे, काफी मारदार स्टोरी आ रहे थे, ओटीटी पे वही ट्रेंड करते थे, और ये सीरीज ने आते ही एक सॉफ्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया लाना। क्या कहना चाहेंगे? Like I said, I'm very proud to be associated with these kind of stories. Particularly, TVF has always broken that barrier of जो रट चलता रहता है ना कि किसी ने थ्रिलर बनाया तो थ्रिलर ही बनाए जा रहे हैं, वही बनाए जा रहे हैं. I think TVF has always gotten amazing stories, and it has a lot of depth. It has a lot of social message, and I think one should be proud of the fact that we are now open, even to the audiences for that matter, are open to receiving this kind of stories. But again, these stories can only be told on OTT. They are not somebody that can be a big feature film. But I'm just so glad that now content is like diverse. It's not just limited to one genre, which is great. OTT में काफी चेंजेस भी आ रहे हैं एवरी ईयर वी आर सेइंग, बट हमने ये साल देखा ना काफी सारे सीजन्स आ रहा है और ओरिजिनलिटी थोड़ी कम भी दिखने को मिल रही है. कैन यू से दिस इज अ स्लो पार्ट ऑफ OTT ग्राफ और इट्स अ स्मॉल डाउन phase of OTT also? I don't think so, because I mean, if season 1 has worked, then it obviously makes sense कि अगर वहाँ पर scope है कि स्टोरी को और आगे लेके जा सकते हैं, उस कैरेक्टर को आगे लेके जा सकते हैं, तो because people have connected, that's the reason why it has worked. And if it is working, then why not take that story forward and see where it goes? Unfortunately, हमारे इंडिया में season 1 या season 2 ही होता है. बहुत कम ऐसा होता है कि season 5, season 6 भी बना हो किसी किसी OTT story का. But abroad we see this all the time. People are doing 8 seasons of one story itself and making brilliant content on that. So I wish that actually that happens in India as well, कि ऐसी कहानियां लाएं कि जिनको हम आगे और भी लेके जा सकें. Make many seasons out of it. But I don't feel that OTT is going slow anytime. People are still very, very interested in watching different stories from different regions of the country actually. अभी OTT को कॉम्पिटिटर मिलता है वर्टिकल ड्रामा. Do you believe vertical drama will take over the OTT platform, because the people का जो time consumption है वो काफी day by day is getting less. Now they have habitual of watching it on a reel format. हाँ, तो जो reels है वो reel ही देखे ना, फिर अभी story को क्यों आप 2-2 मिनट में break कर रहे हो, कोई मजा ही नहीं आएगा honestly. But I personally don't think vertical works for me in my head, but who knows? I mean, तब जब Instagram आया था तब किसी को पता था Instagram is going to be that big, या Facebook आया था, did we know that Facebook is going to be that big? So I guess technology evolves. Yes, of course, like you said, कि लोगों का भी जो threshold है of attention is like literally now 2 minutes. That's the reason why 2 minute के episodes हो रहे हैं. I hope I am right in this, that it doesn't work, but if it's working well, great for them. True. Never say never. For the vertical also. I have, but it somehow doesn't interest me as of now. So I guess if I feel at some point that okay, this is a story that will be interesting to say, then maybe. Never say never. That's one thing I've learned being in this industry, that never say never. You never know.
You What never is that know. then one thing that you have said no, but you have to do it, or आपको आपके इसमें आ ही गया वो झोली में? So yeah, I mean, when I'd come in the industry, obviously I was very sure that I don't want to do an intimate scene or a kissing scene. I'll not be comfortable. And yes, I did end up doing it 2-3 films. Yeah. So like I said, never say never. So I guess, you know, you don't challenge yourself. There might come a time where you will be like, but it makes sense to do this, so it's okay. True. You have done Marathi cinema also. The way Marathi cinema is going now, how you see? Audience acceptance आ गया है. I have always loved Marathi cinema. Their stories are amazing. Again, their stories are such gad ki kahaniyan, na? Like they're so rooted in their culture. I love that people do that. I love that they are so interested and audiences are so interested in watching the stories that come from the local regions of our country, that it's amazing, because you know there are so many things that we don't know about another region, and that only comes through cinema. That we realize that अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा इनके culture में ऐसा भी होता है. This is knowledge, this is storytelling, and I think it's a beautiful way to say it when you say it in a story format, because you make it more interesting for people to then get engaged and watch it. Yeah. Correct me if I'm wrong. काफी लोगों ने आपको गिरजाओक से compare किया, because किससे? गिरजाओक. Okay. Because you have a similar face. So क्या कहना चाहिए, आपके सामने ऐसा कोई आके बातचीत हुई है कभी गिरजा और आपका? No, never actually. Never. I've not even heard it actually. It's the first time. I don't know, where did you read it or see it, or I don't know. No idea. Absolutely no idea. Okay. What's next from your side apart from this? So there are a couple of shows and films that we are kind of still working on. We hopefully should be ready to talk about that another end of July or mid-August sometime. So waiting for those announcements. So are you open for the regional shows or regional series? I actually very recently a show called Super Subbu. And I think it's a Telugu show. And obviously I saw the dubbed version of it, but I really enjoyed it. And I was like, wow, that was such a breeze, easy watch. And again, we had Mithila in that, and I was like, wow, that's great. It's great that we are having this cross-pollination of actors, you know, into different regions, that in Hindi-speaking actors or Marathi-speaking actors can also do Telugu shows. That will be wonderful. True. So any message you want to give to your fans जो हमेशा आपको प्यार देते हुए आए हैं, एक support है, you know कि my audience is there with. I just only want to say that how grateful I am for all their love, and I hope and pray that they keep loving me and keep adding more people to it. Thank you so much, Anjana ji, and all the best. Thank you so much.